अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं हूं जहांगीर, तो मेरे साथ हैं नाजिब, हमजा और आलमगीर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पाकिस्तान। तो कैसे हैं आप सब? ठीक है, आप सबको मेरा प्यारा सलाम। और आज एक और बहुत ही कमाल की और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। टॉप 5 मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियन इन द वर्ल्ड। और ये वीडियो है जी FTD फैक्ट्स पर होगी। सो गाइज प्लीज सब्सक्राइब FTD फैक्ट्स। तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं वीडियो और देखते हैं कि वो कौन से टॉप 5 मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियंस हैं। तो लेट्स स्टार्ट। To be an effective politician, you gotta have a certain level of toughness and ability to make wise judgment calls, sometimes with little to no time from thought to action. This, of course, is really magnified when you take it to the scale of leading a nation. There's a lot of power that comes with being a world leader, and in this episode of FTD Facts, I'm looking at the top 5 most powerful politicians in the world. Hey everyone, how's it going? My name is Leroy Kenton, and thanks for tuning in to another episode of FTD Facts. And we're looking at some politicians here. If you're watching this and you enjoy politics, hit that like button, and if you're a newcomer here to FTD Facts, hit that subscribe button and that bell notification so you don't miss any future videos. And a question I'm going to throw up for you today before I get into this episode is, who was or is your favorite politician and why? Sound off in the comment section down below. Okay, so in this list I'm counting down from 5 to 1, so let's go. At number 5 we have Angela Merkel. Angela Merkel is the Chancellor of Germany since 2005 and also the leader of her own party, the Christian Democratic Union, or the CDU. With more than 10 years and 3 terms in office under her belt, Angela Merkel is one strong and indispensable leader in Europe. She has faced a ton of challenges throughout her tenure and she has come out on top. She's helped hold the Eurozone together during the financial collapse and the global recession. She has stood up to Russian President Vladimir Putin, and she also manages Europe's refugee crisis. At her command, Germany stands above the rest of Europe with a strong economy and low unemployment rates. And though she's not really universally liked, Angela Merkel, she's proved a stabilizing force amid a lot of turmoil. I mean, many people call Angela Merkel Mercavelli after the famous political writer Nicola Machiavelli due to her strategic decision making and for having fundamentally transformed power relations in Europe and the European Union. Next up at number 4 we have King Salman bin Abdulaziz Al Saud, and he's the current king of Saudi Arabia. He took the throne after the passing of his half-brother. 8 of the 12 surviving sons of the country's founding monarch reportedly supported a coup to oust King Salman and replace him with his younger brother, Prince Ahmed bin Abdulaziz. King Salman holds a lot of power and influence over the Middle East and his country's massive oil reserves. Even with oil at historically low prices, Saudi Arabia, the world's largest oil exporter, continues to ramp up production to lower prices and to protect its global market share despite the negative effect it has on the global oil economy. At the number 3 position, we have the current Prime Minister of India, Narendra Modi. Narendra Modi is introducing initiatives to improve the lives of the 1.2 billion people who make up the world's largest democracy, India. Some time ago, he had announced plans to reform and modernize the government and business sectors by implementing a uniform sales tax and boosting foreign direct investment to India. Narendra Modi is the 3rd most followed political leader on Twitter, following Barack Obama and Donald Trump. And he's also pushing India to integrate with the digital world. He believes tech innovations holds a key to lifting India out of poverty in certain areas. Back in 2015, he had traveled to Silicon Valley in the United States, seeking advice and help from tech executives at companies like Google and Facebook. And since he's been doing that, we've really seen the effects because there's been a massive increase of users right here on YouTube from India. So whatever he's doing, it's working. Moving on, at number 2 is US President Donald Trump. Now, the President of the United States is usually considered to be the most powerful person in the free world, even if the person doesn't
don't really have that much experience in politics at all. I don't really need to go into all of that in this episode by now, but you can just follow the news headlines about Donald Trump, and the headlines speak for themselves. And Donald Trump became the first billionaire president in the United States. Donald Trump got his start working for his father Fred, who developed low-cost housing in Brooklyn and Queens. The core of his fortune is tied up in buildings in and around Midtown Manhattan, where luxury real estate values have fallen recently. Now, many people, including Americans, refer to Donald Trump as unpredictable, and no doubt he holds a lot of power. He's very influential, but now even Americans are questioning whether or not he's fit for the job as president. And finally, we reach a number one spot. The most powerful politician in the world is Vladimir Putin. In 2015, the approval ratings for Vladimir Putin, Russia's president and former prime minister, reached an all-time high of 89.9%. After seizing Crimea in the wake of the Ukrainian Revolution, Putin was determined to resurrect Russia as a superpower. At an annual UN meeting in September of 2015, Putin had criticized Barack Obama, asserting that the US's interventions have backfired in the Middle East. And shortly after that, Vladimir Putin, he launched the Russian air campaign to target Islamic forces in Syria and weaken rebellion against the country's president. These airstrikes costed Russia $2.5 million a day, and it quickly escalated a lot of tensions with Western powers. They were like, what is going on over there? But despite all of that happened, it still doesn't stop Vladimir Putin from being the most powerful politician in the world today. So that's it for this episode of FTD Facts. Now, there are some other politicians that I wanted to include on this list. So some of the honorable mentions were Imran Khan, who is the 22nd Prime Minister of Pakistan. Then there is Xi Jinping, the serving president of China. And of course, the leader of North Korea, Kim Jong-un. And all of these men wield a considerable amount of power and influence. They just didn't make it onto this list. I'd love to hear all of your thoughts and comments about anything that I shared in this episode down below. You can follow me on social media as well. Those links are below in this video description. And I'm gonna get on out of here. I'll see you guys real soon. Thank you so much for watching. My name is Leroy Kenton. Stay educated, and I'll see you in another episode. Alright everybody, so if you're watching this, here are some playlists that वीडियो तो बहुत ज़बरदस्त थी और बड़ी कमाल किस्म की वीडियो बनाई है। बात यह है कि चाइना के सदर की जगह हाँ, मुझे लग रहा था कि शायद चाइनीज प्रेसिडेंट इसमें ज़रूर आएंगे। आपको नंबर वन में कौन लग रहा था? रशिया की जगह चाइना? मुझे चाइना के लग रहा था। मेरे को हो सकता है कि यार चाइना लेकिन रशियन की प्यूटन का भी ज़ाहिरी बात है, उनका भी बड़ा ज़्यादा जो है ना। लेकिन आपकी बात ये देखिए, चाइना की जगह इंडिया, मतलब कि मोदी जो है वो उनका नंबर 3 पे ज़्यादा पावरफुल, यानी कि उन्होंने बीच में दिखाया है कि उनका जो है ना असर रहता है। ठीक है, और एक और चीज़ भी थी कि अगर उन्होंने लिस्ट दिखाई थी, अगर लिस्ट बड़ी होती तो शायद इसमें क्या कहते हैं वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट भी होते, इमरान खान भी होते, और टॉप 10 में। और उसके बाद एक और कौन से थे वो थे हाँ, नॉर्थ कोरिया के शी जिनपिंग, वो दूसरे थे। क्या नाम शी जिनपिंग उनका? थे साउथ कोरिया के यार सारों को पता ना। ओ डड्डू सा, वो वो डड्डू सा जो है वो कुछ समझ आया, आपको ही पता लग गया। वो बड़ा हाँ, वहाँ पे सुना है कि वो जो कटिंग करवाते हैं ना, शुमाली कोरिया को, जनूबी कोरिया नहीं, तो नॉर्थ कोरिया जिसे कहते हैं, वो वहाँ पे आप एक ही कटिंग करानी है जिसने भी करानी है। नहीं, सब ने एक तरह के बाल बनाने हैं, जो भी है। उन्होंने कुछ कटिंग्स दी हुई है कि इससे ज़्यादा नहीं करानी। वहाँ नेट भी आपको यूज़ नहीं कर सकता, पता है आपको? वहाँ अक्सर यूज़ करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं टॉप 10 पावरफुल। सो गाइस, नंबर 5 पे थी ना, वो मुझे पता नहीं चला। ये आप लोग बताएं, क्या वाकई वो उसकी जगह बनती है नंबर 5 उनकी जगह पे चाइना की सर्विस बन गई मेरे हिसाब से। हाँ, बन सकती है, बड़े आराम से नंबर 5 पे उनकी जगह बनती। लेकिन उन्होंने बेसिकली बताया कि भी बहुत का असर आखिर वजह होगी ना कि यूरोप के अंदर उन्होंने बताया है कि यूरोप के अंदर इस खातून का जो है इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उन्होंने अपना असर छोड़ा हुआ है यूरोप में। उनकी बात का कोई वज़न होता है, ठीक है, वो कोई बात करती हैं तो वो बात सुनी जाती है, तो शायद इसलिए तो ये एक वजह थी, उनका नाम लिया गया। इसी तरह जो है ना, इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी ऐसे ही है और इसलिए उनका नाम भी आया है।
और इसी तरह जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़े से जो है ना क्या कहते हैं शाय किस्म के बच्चे हैं, ठीक है। वो प्रेसिडेंट भी हैं और लेकिन शाय किस्म के हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा यानी कि वो आवाम को अपनी जो है ना जिसे कहते हैं ना कि एंटरटेन करते रहते हैं, अपनी गवर्नमेंट में होते हुए भी लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं अपने जो है ना चेहरे के एक्सप्रेशन से, अपने हाथों के एक्सप्रेशन से। तो वो थोड़ा सा जो है ना लोगों को एंटरटेन करते हैं, एंटरटेनर है, तो इसलिए इसी तरह जो है प्यूटन जो है उनका आजकल वैसे ही ज़रा असर काफ़ी चल रहा है। और इंडिया की ठीक है। पॉपुलेशन वो जहाँ पे अगर कोई अमेरिका का कहीं पे इन्फ्लुएंस होता है तो वो दिखाते हैं, अमेरिका को अगर कोई आंख दिखाता है तो वो आजकल रशियन प्रेसिडेंट है। और नंबर 3 पे वो ये है कि यार रशिया है जो मुझे और नंबर 3 पे जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी की वजह से, जमहूरियत की वजह से इंडिया के आ गए प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक चीज़ थी जिस वजह से जो है ना ये सारा हुआ। तो ये एक बहरहाल ज़बरदस्त फिल्म की वीडियो थी, बड़ी ज़बरदस्त और मज़ा आया मुझे देखे, ठीक है। FTT फैक्ट्स की वीडियो हमेशा ही अच्छी होती हैं। और गाइस ये वीडियो बहुत अच्छा था, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपको जरूर बताना है। जाने से पहले आपसे कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कीप वॉचिंग पाकिस्तान रिएक्ट।